Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel, The Competitive Scholar. Our today's topic of town planning and urban management is history of planning in Pakistan. ये हमारी लास्ट आउटलाइन चल रही है इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन पाकिस्तान. होप सो कि हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में या फिर अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे ये टॉपिक. हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन पाकिस्तान किस तरह इंपॉर्टेंट है टाउन प्लानिंग इन अर्बन मैनेजमेंट में, किस तरह ये अपना रोल प्ले करती है और पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक जो है वो कितनी दफ़ा फॉर्मुलेट हो चुकी हैं डिफरेंट थ्योरीज़, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्लान्स के पाकिस्तान की जो है वो क्या प्लानिंग होगी आने वाले सालों में, उसके रीजनल प्लान्स क्या हैं, ठीक है, कब कब वो बनते रहे, कब कब दोबारा से बनते रहे. तो ये सारा देखेंगे हम आज की टॉपिक में. लेट्स स्टार्ट. Notions of TP traditions बिफोर कलोनियलिस्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे कलोनियलिस्ट से पहले क्या था और फिर ब्रिटिश राज जब आया तब क्या था और फिर वक्त के साथ किस तरह से चेंजिंग्स आती रही. British began to change existing towns by building cantonment for military and area for civil lines for administration. Activity necessarily under the heading of TP, but it was excessive in TP nevertheless. TP mentionally or essentially local physical and restrictive rooted in engineering and architectural extradition. TP was reactive and practiced sporadically. Need for comprehensive planning. In response to mounting problems carried or caused by rapid growth and need to plan a new capital, Aims was comprehensive planning at the city or city region scale. Detail and specificity was to local scale. So, the vehicle used was a master plan, MP tailored in shape of outline development plan for smaller towns. This form of planning survived longer in Pakistan than in the UK. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ मास्टर प्लान्स क्या क्या थे, जितने मास्टर प्लान बने उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेसेस क्या थी. टू डेट master plans and projected in the key official document for plan development of a town city. It is a comprehensiveness in its main claim. MP methodology led readiness plans to are never implemented. MP emphasizes on physical planning or touches upon social and economic dimensions of proposals only peripherally. Little attention is paid to importance of setting development priorities in light of fiscal and administrative constraints of government. The regional context is often forgotten, so it is legally or largely a bundle of half-baked ideas incorporated into a purpose land use plan. The process of preparing plans in time consuming and plans of meticulously prepared are rigid and often outdated by the time they are enforced. In a rapidly urbanizing circumstances, the projection on using which long-term plans are based often go hangward. Conventional master plan are proposed with a limited participation of stakeholders. Even if it is well prepared with all available input aims, it addresses developmental needs to be backed by the well-oiled administrative machinery which stimulated the document used in Pakistani cities. Most of what is being implemented by has not been given in the master plan. What is the question of this? Out of date, detailed plan encourage happening the development and mean that infrastructure is underdeveloped or underprovided and follows development. Such planning floods the spectaculars and squeezes the progress. Then, it is accepted everywhere as a necessary function. What? Master plan. A hallmark of human society, there is no substitute to planning, but if it is not achieved as the local conditions, it can easily be substituted by the inquiry. Then the success of planning in the future may depend on the success with which we use integrate our design, spatial planning, public policy, market forces and cultural management. What can be done? अब ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट. There can be no sustainable development without sustainable urbanization. There can be no sustainable urbanization without a new form of planning, and that form of planning has to be pro-poor. Then, why planning could not bring better living conditions? क्यों
प्लानिंग से हम जो है वो अभी तक लिविंग कंडीशन अपनी बेहतर क्यों नहीं बना सके, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ बातों तक ही रहती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। दैट्स वाई हुई कि हमारे रहने का तरीका जो है वो चेंज नहीं हुआ, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर नहीं हुआ। दैट्स वाई प्लानिंग could not bring better living conditions such as it is. So let's see what are these. Planners' advice may be good or inappropriate. Planners' role may be recognized or ignored. Planners may not have adequate training. Politicians may have deteriorated some of the public interest. Plans may be unrealistic given their resource requirements. Plans may not reflect priorities of community or business interests. Powerful economic interest may have influence on the implementation of plans. Implementation authority may be fragmented among the jurisdictions. So, what are the problems of slums and multiplying the area? Development keeps sprawling, so environmental degradation also happening. So, transport efficiency is declining, energy costs are rising, housing supply and demand gap is widening, low increase housing issues and bearing the accumulate the services. So next are the regional plans in history ऑफ प्लानिंग इन पाकिस्तान, कि जब से पाकिस्तान बना है तब से कौन कौन से रीजनल प्लान जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड हुए हैं, बने हैं, और फिर उसकी क्या आउटकम थी. सो फर्स्ट वन इज 6 ईयर डेवलपमेंटल प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम रैन फ्रॉम 1951 से 1957 तक ही चला, ठीक है. 1950 में ये इस बात में सोचना समझना जो है वो शुरू किया पॉलिटिशियंस ने, और जो गवर्नमेंट पार्टीज़ थी, गवर्नमेंट एंटिटीज़ थी, उन्होंने सोचना शुरू किया कि कोई रीजनल प्लान होना चाहिए जिसके हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करा सकें और प्लानिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो. सो पहला जो था वो प्लान 6 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि 1951 से 1957 तक था. सो दैट क्योंकि ये 6 साल का था, अंडर द कोलंबो प्लान, बट as abandoned 2 years early due to issues arising from the Korean War. तो क्योंकि तब कोरियन वार भी हो रही थी, तो फिर ये प्लान तो 6 साल का था, लेकिन कब तक चला, 4 साल तक, ठीक है. उन्होंने कहा है कि उसकी टाइमिंग से पहले ही 2 साल पहले ही वो ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि कोरियन वार का इम्पैक्ट उस पर आ गया. फिर क्या हुआ, मीडियम टर्म प्लान बनाया गया 1955 से लेके 1970 तक. So Pakistan had 3 medium-term plans, each lasting 5 years. The main strategy was to maximize growth in GNP exports and savings. ठीक है. फिर क्या हुआ कि जो है वो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर क्या बनते रहे, मीडियम टर्म प्लान्स बनते रहे, ठीक है. 1955 से लेके 1960 तक, फिर 1960 से लेके 1965 तक, और फिर क्या जी 1965 से लेके 1970 तक. क्यों? क्योंकि 3 टर्म बने ना, मीडियम टर्म प्लान्स 3 बने 5-5 साल के. सो दैट्स वाई. उसके बाद जी क्या प्लान बना, 4th 5 ईयर प्लान तीसरा था. दिस प्लान विच रैन फ्रॉम 1970 to 1975 was designed to improve the standard of living for the man power. So, however, it was scrapped due to the secession of ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है. सेपरेट हो गया था ईस्ट पाकिस्तान, जो क्या बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है. तो इस वजह से जो था ये भी क्या हो गया, स्क्रैप हो गया. देन 5th 5 ईयर प्लान बनाया गया. दिस प्लान रैन फ्रॉम 1973 to 1983 एंड मार्क पाकिस्तान रिटर्न टू मीडियम टर्म प्लानिंग. फिर उसके बाद क्या चलती रही, मीडियम टर्म प्लानिंग जो है वो साथ साथ चलती रही. Regional planning is also known as urban planning, which is a technical and political process that involves designing and developing land use and the built environment. The types of RP includes, RP means regional planning. So the type of regional planning includes comprehensive planning, functional planning, physical planning, environmental planning and economic planning. सो नेक्स्ट है हमारे पास 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ पाकिस्तान. 5 ईयर प्लान्स ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो किस तरह कंसीव किए गए, कौन से डिपार्टमेंट ने किया, ठीक है, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा, इसे जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी इस सब्जेक्ट की, CSS या PMS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इस सब्जेक्ट की. ये लास्ट आउटलाइन होगी 5 ईयर्स प्लान ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ साथ ही हम जो है इसके प्रीवियस पेपर्स में जो MCQs बार बार रिपीट हुए हैं उसे डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स के साथ. तो आज के वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन हो सो यू मे आस्क. टिल दैट टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.